is G20 stands for? The Group of 20 or G20? A collection of 20 of the world's largest economics formed in 1999 and was conceived as a bloc that would bring together the most important industrialized and developing economics to discuss international economic and financial stability. So, here is the question, what is the meaning of G20? क्या मतलब है G20 का? Can we say the group of 20 or G20 is the premier? Premier ये क्या है ये word premier? अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इसका similar word जो है that is leading और rewarding, और अगर हम हिंदी की जानब चले तो देखेंगे बड़ा या महान, और अगर हम उर्दू में देखें तो आला भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो प्रीमियर है that is a title for the head of government in central governments, state governments and in local governments of some countries. और जो ये प्रीमियम है that will normally be a head of government but is not the head of state. Okay? So here we can say that the group of 20s is the premier intergovernmental forum for international economic cooperation, and the forum plays an important role in shaping and strengthening global architecture and governance on all major international economic issues. So here is the question, what is G20 summit? Can we say the group of 20 or G20 is an intergovernmental organization made up of the European Union and 19 other nations, and it strives to address important global economic concerns like international financial stability, reducing greenhouse gas emissions, and sustainable development. Okay. So here is another question. Who creates the G20? किसने बनाया ये G20? Can we say the group of 20 or G20 was formed in 1999 and was originally a meeting of the ministers of finance and the governor of the central bank in an effort to broaden the discussion of policies that are beneficial for resolving the global economic and financial crisis. Is that right? So, अभी तक हम बात कर रहे थे what is the meaning of G20, what is G20 summit, who created G20. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक बात आ रही है कि who hosted the first G20 summit. अगर आज हम बता रहे कि हमारे इंडिया में G20 समिट 2023 चल रहा है, लेकिन जो ये पहला वाला समिट था हु होस्टेड दैट? अगर आज हमारी इंडियन कंट्री होस्ट कर रही है, पहला वाला जो समिट था किसने होस्ट किया? Here I want to tell you that the first G20 summit was held in 2008 in Washington, USA, and it set the scene for the most dramatic reform of global finance in over 60 years. Okay, और एक बार बताना चाहूँगी, the first G20 summit was held in 2008 in Washington, USA, and it set the scene for the most dramatic reform of global finance in over 60 years. Okay, तो यहाँ पे और एक बात आ रही है कि ये जो G20 countries है, why these are formed? Why G20 countries are formed? Here I want to tell you that the G20 was created in response to both to the financial crisis that arose in a number of emerging economics in the 90s and to the growing recognition that some of these countries were not adequately represented in global economic discussions and governance. Okay? यहाँ पे और एक बात आ रही है कि हम कभी कभार बताते हैं कि G20 और UN में क्या फ़र्क है, आप सबने सुना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी हाउ इज G20 डिफरेंट फ्रॉम UN. तो the UN and the G20's intended aims are different,
and the UN is committed to maintain international peace and security. Whereas the G20 is the so-called premier forum for international economic development. And the G20 was never intended to be a global organization resembling the UN. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और बात उठती है कि ये जो G20 हमने बताया कि क्यों बनाया गया इन कंट्रीज को, डिफरेंस क्या है, G20 है क्या, लेकिन अब हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ G20 का मोटिव क्या है. We can say that life ties closely I can say that with India's G20 motive. आपने सुना होगा कि हम बताते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका हम अगर हम देखेंगे संस्कृत में जिसका ये मतलब है धरती ही परिवार है. As you all know that अगर जो भी living organisms है, जो all the living organisms which are present in the earth, we can say that is a family, that are in a family. एक ही परिवार है. That is why we can say that the today's or this time's theme is one earth, one family and one future. And with our human-centric approach to technology, development in sectors ranging from agriculture to education. ठीक है, एक बार मैं फिर यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो है मोटिव जो है G20 का क्या है. We can say that life ties closely with India's G20 motto, which we can say that वासुदेवा कुटुंबकम, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि धरती ही परिवार है. और इस साल का जो थीम दिया गया है that is one earth, one family and one future. And with our human-centric approach to technology also, we can say that the development in sectors ranging from agriculture to education. ओके तो अब यहाँ पे हम एक चीज बताएंगे कि इस जो ये जो G20 है इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, क्या चीज है, क्या हमें कोई फायदा मिलता है इससे. यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो G20 लीडरशिप है ऑन एंटी करप्शन, पर्टिकुलरली ऑन फॉरेन bribery, beneficial ownerships and public sector integrity helps. जो हमने यहाँ पे एक बार मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी, G20 leadership on anti-corruption, particularly on foreign bribery, beneficial ownerships and public sector integrity helps to bolster the impact of development, revenues and benefits. G20 work targets keys areas that are enablers for sustainable development. ओके फिर एक बार आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये G20 समिट 2023 क्यों बताते हैं हम. The G20 Summit 2023 will be going to organize in India this year, and as per the report, India has the presidency this time and will host the G20 meeting in New Delhi. Okay, every year the member country that has the presidency invites the guest countries to the G20 meetings. Okay, और अगर हम ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी जो G20 summit है that was held in November 2022 इंडोनेशिया में हुआ था. फिर एक बार बताना चाहूंगी कि the last G20 summit was held in November 2022 in Indonesia. लेकिन हम आज की बात करेंगे that presently the Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji is the chairman of G20. And here I want to tell you that the chairman of the G20 corporation changes every year. And as we all understand by the name G20, that the G20 also known as the Group of 20, which has 20 members. Out of 20 members, there is the European Union and 19 other countries. Okay, and according to the reports, India will be the host of the G20 2023, and each member country of the G20 summit gets a turn to host the summit. And this time the presidency has been handed over to India for the G20 summit 2023. Okay, and the G20 meeting will get started, as you all know that on 1st of December 2022 को start हुआ था और ये चलता जाएगा, will remain continue till 30th of November 2023 को एक पूरा साल होता है.
एंड द G20 इनिशियली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हम इसकी और नजर डालेंगे, वी कैन से दैट G20 इनिशियली फोकस्ड लार्जली ऑन ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, but it has since expanded its agenda, which includes trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy, environment and anti-corruption. ठीक है, तो अगर अब हमने बातें की इसके बारे में, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि G20 मेंबर्स इसमें कौन कौन से होते हैं और क्या है इसके अंदर। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ 20 है G20 दैट कंप्राइजेज 19 कंट्रीज की, जैसे कि हमने अभी बात की। इसमें अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन इज इंक्लूडेड इन दैट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये G20 मेंबर्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। फिर एक बार बताऊंगी, द G20 members represent around 85% of the global GDP, over 75% of the global trade, and about two-third of the world's population. ओके, अब हमने इतनी बातें की, अब हम ये देखेंगे ये G20 जो है ये काम कैसे करता है, हाउ G20 वर्क्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये G20 प्रेसिडेंसी जो है स्ट्रीट्स the G20 agenda for 1 year and hosts the summit. The G20 consists of two parallel tracks. एक तो फाइनेंशियल ट्रैक है, दूसरा सर्फा ट्रैक है। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स जो होते हैं एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स दैट लीड द फाइनेंशियल ट्रैक, वाइल द सर्फा ट्रैक जो होता है विल वर्क आफ्टर फाइनेंशियल ट्रैक। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दीज वर्किंग ग्रुप्स मीट रेगुलरली throughout the term of each presidency. और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि the SERFAs oversee the negotiations over the course of the year and discussing agenda items for the summit and coordinating the work of the G20. Okay, and in addition, there are engagement groups also which are involved in that, which brings together, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि the civil societies जो है, parliamentarians को इसमें involve किया जा सकता है, women's, youth, business and researchers of the G20 countries are included in that also. तो मेरे ख्याल में मेरे को लगता है कि this is all for the G20 this time. Next time we will meet again. Till then, goodbye.